ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े, जैसे कैरेक्टर पढ़ा, हमने इंटीजर पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, देन वी हैड डबल और उनके वेरिएशंस भी लाइक लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट या लॉन्ग डबल एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ये हमारे पास डेटा टाइप्स थे, इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। This can store only as one value at any given time. लेकिन कभी कभार हमें चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, we have to process that. So large amount of data storage में चाहिए होती है. So we need something like arrays. Actually जो data types हैं, there are three types. We got derived data types, fundamental data types and user defined data types. फंडामेंटल डेटा टाइप्स तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, वो जैसे इंटीग्रल टाइप्स हैं, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स है, कैरेक्टर टाइप्स है, हमने वो देखा। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आता हमारे पास है एरेज, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। उसका हम एरेज को अभी उसके इंट्रोडक्शन इस वीडियो में देंगे। देन वी हैव आल्सो यूजर डिफाइंड टाइप्स लाइक वी हैव स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एंड एनुमरेशंस। सो व्हाट इज दिस एरे? Array actually हमारे पास it's a derived data type and इसकी एक fixed size of sequential collection of elements होता है of the same data type. Actually it's a contiguous memory allocation, I can say. Contiguous means एक के बाद दूसरा. Like I'll show you a bit of a diagram to let you understand more. We got here. So like this we got and like here we have integer type of array a. We initialize actually like this. Well, actually we declare it like this, integer. So I named the array a and it's of 6 memory locations. Got it? So we have 6 bytes allocated actually of data type int. It's like this. We call also arrays, we call that they are subscripted or indexed data types. जो index होता है या subscript जो होता है वो bracket के अंदर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें ये integer variable integer ही लिखना है because हम इसमें points नहीं ले सकते. It should be integer always. You have to take care of that. यहाँ पर एक और बात जो है कि this array is not हमारे पास जो arrays होते हैं वो ये जो जैसे ये array है, it's a one dimensional array. We can have a two dimensional arrays, we can have a three dimensional arrays. और arrays जो है ना वो contiguous memory allocation, जो मैंने बताया कि वो contiguous memory allocate करते हैं. Contiguous means एक के बाद दूसरा, this one उसके बाद ये, उसके बाद ये, कि मेमोरी में एक बिल्कुल जगह पकड़ेंगे ये 5 यानी कि 6. It started from 0 actually. If I declare 6, that means 0 up to 5. जो array का नाम होता है actually, integer a for example is an array name is a of 0. If I write here 0, it is a pointer to the first this memory allocated to this data type int a6. A of 1 is this one, a of 2 is this one. It's a pointer. We can directly access memory. If I say a of 1, it will be this thing. And if I say a of 0, it will be this thing. A of 2, this, a of 3, and so on. So here we can say a of 0 is 59. So this is now assigning the values. Now 59 is assigned to a of 0. That means in this space 59 will be placed. A of 5 is minus 10. In this place minus 10 will be allocated. A of I divided by 2. I is, we have integer I variable is 7. So 7 divided by 2. That's the integer variable of that. That's because the int, it will not take the points. So that will be in fact 3. Because 2, 3, 6. Yani ki 3. That means this A of 3. We can say A of 3 is equivalent to A of I over 2 because I is 7. So that is this place. उसमें 2 जाएगा. But if I say a of 6 is equal to 0, it's wrong.
crossed. Why? Because a of 6 means something outside this array. We have not allocated the space. So a of 6 is 0 is wrong, because उतनी space के पास है नहीं, f6 है नहीं, f5 तक ही है. हमने 6 लिखा है यहाँ पर, but we have, जब हम access करेंगे array को, we have to say 1 minus that 6, because it starts from 0 not from 1. We have to take care of that. Or we can say f minus 1 is 5 is also wrong, because there is nothing before 0. Minus 1 कोई चीज़ नहीं है, 0 से शुरू होता है हमारे पास array. So that was all about this introduction of this arrays. Now we actually put the things into our program. Likewise, in the introduction of this, I will say, for example, we got a program to declare an array capable to store 10 rates. हमारे पास एक array में बनानी है, declare करनी है, जो 10 rates को पकड़ेगी, including पैसा, यानी कि पैसा भी. That means it should not be integer array. It should be a floating real array. Floating जो points होते हैं हमारे पास, वो ये लेनी चाहिए. इसलिए हम इसको as an float data type declare करेंगे. It's a float data type. Name कुछ भी आप रख सकते हो. और इस array को मैं initialize करना है और print भी करना है. So how can we do that? We have got main. Then we got float. We say float. It's caps. So float float. हम कुछ नाम देंगे इस array का. से a मैंने नाम दिया इस array का, a of 10. So 10 spaces actually will be allocated to my array. Contiguous साथ साथ जो है spaces 10 मेरी जो है array वो floating type होगी, उसको दी जाएगी. इसको हम initialize कर सकते हैं यहाँ पर ही ऐसे, like हम we say it's like this, is equal, then we have to put brace, then we have to give value like 10.33. I give first value to it, then we say comma, say 45.21. the second जो मेरे पास है 10 rates with पैसा मैंने जो कहा, and I can say then 55.23 comma, हमारे पास 3 हो गए फिलहाल, and 26, next one say I say 26.56, like that, and so we can do 10 out of them, but I will try to minimize this up to 5, because okay, it's like this. Or we can have a 10, that's not a problem. We can have a 10 if we say 10 here, and we assign only 5 values, 1, 2, 3 and 4, and next one 5, like 45 point something, 78, and I close the brace and terminator. The values, 5 values are assigned, and rest 5 जो है ना उसमें क्या होगा, क्योंकि 10 हमारे पास, अगर 5 में ये हो गया तो next 5 में क्या होगा, उन 5 में हमारे पास zeros रहेंगे. It will be zeros will be assigned to all those 5. Let us see all these things, and I got a loop variable मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ I, so that I can read it, and I'll say clear screen CLR SCR, so that there will be no previous screens left. I run my loop for, I is equal 0, I is equal to 0, I less than 10, 0 up to 10, in fact 9, I plus plus. Let me see what kind of values are going to come. And what I do in this is I will say printf, printf, the rate number %d article is equal to %, I will say .2f, using some previous things which I have taught you already, \n, comma I plus 1. Up to what I'm doing, I plus 1, and comma, next thing is a of I, isn't it? So you're not getting. Let me tell you a bit what I'm doing. Then get ch is already there.
For does not need a brace because इसमें एक ही statement है, so we don't need a brace here. अगर बस दो statements होती है, no, we need a brace at that time. But right now we don't need a brace because it's got only one statement. As a printf, the read a person D article. Person D की जगह मैं लिखूंगा कौन सा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला, फिर दूसरा कहूँ, फिर तीसरा कहूँ. तो person D की जगह मैंने लिखा यहाँ पे I+1 because I is 0, क्योंकि इसका 0 से शुरू होता है और ये भी 0 से शुरू होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा ये पहला है, दूसरा है. So that's why I use 0+1 is 1 for first thing. Then I will be 1, 1+1 is 2, यानी कि दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या है, ये बोलना कि कौन सा है ये. And then in fact person 2f, उसमें मैं वैल्यू दूंगा इसका, जो मेरे पास वैल्यू स्टोर है वो चीज़, that is in fact f because it's a floating float data type. And there is point 2 means point के बाद मेरे पास आप दो ही डेसिमल दीजिए. मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद दो की जगह ज़्यादा होंगे, like because somewhere the first is 3, 3, 4, like this we can have. So इसको ये दो ही के बाद देगा, मेरे पास दो चाहिए, like that. I try to run it Control F9. So you see the read of first number 1 article. I say 1, 2 आ जाए मुझे पहला आर्टिकल, इसलिए मैंने वो % D दिया था 10.33. So you see here इसने यहाँ पे इसको दो ही डेसिमल तक दिया. And you see up to हमने 5 ही वैल्यू दिए थे, 1, 2, 3, 4, 5, isn't it? So what is in the 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0 means कि इसने बाकी में सब में assign किए zeros. Got it? So यहाँ पे जो % D मैंने दिया था, मैंने इसलिए दिया था ताकि मैं बताऊँ कि कौन सा मैं access कर रहा हूँ array का, 1, 2, 3, 4 or something like that. If I do it in actual way, I'll say I only, not I+1, because we say this is A of 0, not A of 1, so it should be like that. So number 0 article, this. Number 1 article, because I use the article, that's why I use it from 1. But if you want to say array, a 0th element of the array, like this 0th element, it got this, and rest one has got a 0. So this is a valid thing, because if you don't assign say values to this, you got a 20 variable or something like that, and you don't assign any values, so जो compiler हमारा होगा वो zeros खुद ही assign करेगा.